Next morning I wake up, I go to Guruji, I'm like, boss, I need a doctor. I don't know what is up with me. I have insane anxiety that I did not even know I had. I need to go home. I need a doctor. I don't need meditation. I think meditation becomes our own personally chosen confinement. Guruji looks at me, he's like, look, if you go out and you go to a doctor, they'll give you pills. And those pills will at best suppress your anxiety. यहाँ बैठे रहे, हम eradicate करते हैं. अच्छा हुआ मैं गुरुजी की बात सुनी. अच्छा हुआ मेरे को ये पता था कि जब डर लगे तो सामने आंखों में गाड़ के देखो, आजा. अच्छा है कि मेरे को ये पता था, क्योंकि अगर मैं शायद क्विट कर देता ना तो मैं साइकाइट्रिस्टों के चक्कर काट रहा हूँ. जब आप खाली जगह पे अपनी बढ़ाई या अपनी बुराई से उसको भरने लगो ना, तब अहम बन रहा है, तब ईगो कंस्ट्रक्शन हो रही है. पेन is what ensures that you are alive. Pain brings you very close to your own true self. उस थॉट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन एक एक्शन है और इन सब के बीच में गैप है. एंड द टेक्निक इटसेल्फ अलाउज यू टू स्टार्ट सीइंग दैट डिस्टेंस. एंड सो इवेंचुअली दैट हैपेंड. What you think of yourself is what people will eventually think of yourself. The trick is not in what you say. And the trick is also not in how you say it. The trick is in how you feel. What you chase with sex is those 8 seconds of orgasm when there is a non-duality. जॉब वालों का पर्पस कभी एग्जैक्टली उनकी जॉब नहीं होती, उस जॉब का आउटकम होता है. One of my friends, he took money from me, some 10 lakh rupees. कुछ हम साथ में बिजनेस धंधा करने वाले थे, ठीक है, और मेरा 10 साल पुराना दोस्त गायब. मैं जेन्युइनली लोगों को एडवाइस करता हूँ, शादी के बाद अपने घर वालों के साथ मत रहो, क्योंकि सास बहू और बाप बेटा ये दो रिश्ते कभी नहीं बैठते. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. In this episode, we have tried to decode success from various perspectives and lenses: the intellectual, mental, emotional, financial, materialistic, spiritual, and the whole of it. We have also tried to decode the art of conversations, how you can make your conversations, your interactions more effective, and what is the role of your proficiency in a language in becoming a more charismatic or an effective speaker, or does it even play a role? We've also tried to decode the mindset of confident people and how all these materialistic concepts, whether it's conversation or it's success or it's any skill for that matter, is more related to your mindset than anything else. We've also tried to decode confidence for all of you. So there's a lot that you can learn from this episode. So watch it till the end before forming an opinion. And also, please do share your favorite moments and the things that you've learned from this podcast in the comment section. I read every single comment, and your encouragement gives me the much needed push to keep continuing on the Journey Within podcast. Let's begin. Today, joining me on this podcast is an author, entrepreneur, a content creator, a podcaster himself. Please welcome Prakhar Gupta on the Journey Within podcast. Thank you so much for having me, Shobha. That is the energy you can get from a person who has been doing it for long enough. Yeah, the stage is my drug. I really feel so that happiness keeps you distracted while pain brings a sense of focus to you. There's something brilliant Ramdas said. I was listening only this morning. You know Ramdas? Yeah. Right. Ramdas said, when you live on the personality plane or when you live on the psychological plane, what you want is happy experiences. Right? Everybody will relate to this. What you want is for things to be good. I desire this, let me get this. I want success, let me get success. I want relationships, let me get relationships. But when you begin to unfold yourself on the spiritual plane, sadder experiences, tragedies, heartbreaks, pain is much more useful than happy experiences. Now when I look back, all pains in my life have been fairly beautiful. I have nothing to complain for. Nothing to complain at all. Pain is what ensures that you are alive. If you were not alive, there'd be no pain. And that is why people get addicted to self-harm in whatever form or fashion. Vices, smoking, drinking, sex addiction, whatever kind of self-masochistic pain that people want from life, they do it because it makes them feel alive. Yeah, pain could be one of the greatest teachers that we could have in lives. Yeah. Because I think most of my life lessons have also come from pain. All life lessons. Yeah, all life lessons come from there. Success hardly teaches you anything. In fact, to maintain success and to kind of, keep it as it is, you have to kind of engage into some kind of distractions, etc. Those get you away from your center. Like people say that isko success, raas nahi aayi, sar chad gayi and all of that. You get into all of that, which is not even maybe that relevant to you or that important to you for that matter, but you are just engaged in maintaining that. Whereas pain brings you very close to your own
true self, how it kind of jolts you and impacts you, and from there, who you are, the whole quest of, what I want to build on and all that starts. Have you heard of post-traumatic stress disorder? Yes. Very common. Very right? common. Have you heard of post-traumatic growth? Of course. I Right? have been there, doing that, done that, all of that. Okay, Yeah. so PTG is what is in psychology known as the opposite of PTSD. Yeah. Right. The question is, why does some trauma create PTG and why does some trauma create PTSD? And so, me and a psychiatrist friend of mine, brilliant fellow by the way, Israeli, lives in America, is a psychiatric resident in New York somewhere. Like, if I'm smart, that guy is 6 times me minimum, right? And he will hate me for saying this. And I'm saying this in English, so he watches this. We were talking about this recently, and I said, listen, I don't think trauma becomes trauma at the level of which a psychologist describes it as trauma. I think all events in life that force you to grow are traumatic. All inflection points in life. You can go back right now, reflect, think about all the moments that were painful. And most common ones are losses, heartbreaks, papa ne daant diya, accident ho gaya, XYZ, ABC. And what happens in that moment is when reality strikes you so hard, you're like, no, I need to do something about it. And you change. Sometimes these are too big. And you must pray that you get these very big traumas as well. Because what happens is, you now have to decide whether you want to fixate and solve something that was in the past, or do you want to let go of your psychological grip on this. मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है, ये हुआ था मेरे साथ उस दिन, उसने मेरे को ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे से ये गलती हुई थी, मैं इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहा. और जैसे ही तुम उसको छोड़ने के तरीके अपना लेते हो, वो छूट जाता है ना. एक तो it falls into the background of your mind, it's no longer in the foreground. And therefore, the stress associated with it also falls in the background. And then the next day, the growth can begin. Trauma is not bad. Trauma is a consistent part of everyone's journey. How you process it determines whether you grow from it or do you derive stress or stressful disorders out of it. That is what is really happening with traumas. Yeah, even I believe that trauma is essential. Pain is extremely essential for you to have that push to kind of, again, recognize your past patterns and grow out of those. Now it happens, the processing happens in 2 ways for people. And the idea of the journey within podcast is to also understand how we process these pain points, thoughts, feelings, emotions, and events in our life, right? One way could be you processing it in a manner that it's putting you on a trajectory of growth, like you're saying. And the other way is that it puts you on a downward spiral where you are into self-pity, self-victimization, and then just constantly living with the question, why is it happening to me? It's living in the past. Yeah, Living in the past, right. And not trying to confront the present moment now, which is kind of asking you to take an action to come out of it. I used to be a heavy fan of meaning in terms of, so I'll describe this in psychological terms, tell me if this fits, okay? Reality is too broad and wide, there is too many random variables, कुछ भी हो सकता है, ये कैमरा गिर सकता है, लाइट गिर सकती है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, यहाँ पे हो सकता है तुम मेरे को धोखा दे रही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, at every given point, our psychology forces us to create a map of reality. And that map of reality is how we act. The way I sit is a map of reality. Somebody might say, तू पैर ऊपर करके क्यों बैठा है? उनकी मैप में वो फिट नहीं होता. Now we are constantly in this process of creating a map. And sometimes reality hits us beyond this map, which is the point of trauma, right? And so then we have to readjust and so on. But this map, what is the function of this map? And from what I gather, tell me if I've understood this correctly about you. Your map seems to be anchored to building. Is that true? Like, is your map, the way you look at reality, is it oriented towards what I can build? Or no? Not really towards building per se, but Achievement? creating, contribution. Sure. All of that. Right. Yes. So creating contribution and such. At least I'm at this stage. I'm not sure if this is the ultimate answer, but in this present moment as we speak today, my map is geared towards a sense of peace. So that's what I'm more interested in. Success. And I've been thinking about this so much. Okay? Like insane amounts. What is it about success that makes people want to chase success? What do you think? What is it about success? What is it psychologically कि मेरे को success चाहिए? क्यों चाहिए success? On the surface level, people are seeking out for, let's say, validation, name, fame, money, a good partner, materialistic possessions, etc., etc. होता कुछ नहीं है ना, ये वही तो एक quest है फिर क्यों जिसमें चाहिए? Exactly, that is what we are trying to decode with this podcast. ये तो 2 ही step है, करते हैं ना decode. Shobha, I want money and I want fame, ठीक है? And you ask me क्यों? And I'm like, पता नहीं. So what will you ask me next? हाँ, मतलब it is stupid, no? That's what when you dig deeper into all these layers, sometimes you arrive at these answers which are so which are like nothing short of realizations that what was I running after? Because it's not making sense when I'm digging deeper. You know, एक और कार आने से क्या होगा?
अच्छा ये मिल जाएगा, उसको ये दिखा देंगे, फिर दूसरी और आ जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा. When you keep digging this deeper, then you have more hunger towards it. You're like, okay, this is what Sure. is the chase all about. Sure. And if I get at this point, then it's going to make sense. Then all of this is going to fall in place for me and stuff. And when I sort of got there, I mean, I don't know what's the finish line. There is no. There is no finish line, right? How rich? So in my in my head, whatever finish line we individually make for ourselves, when I got there and I figured out that it's still not adding up. So what is it that is missing? So let's take success as a lifelong journey, compress it into something shorter for people to visualize it better. Let's take success in the sense of acquiring a mating partner, a biological impulse, much like financial success is a biological impulse. I'm a 25-year-old. I'm going about. I find a woman very attractive. I have a desire. मेरे अंदर कुछ जागता है कि मेरे को इससे बात करनी है. I want to be with her in some capacity. I want to share intimacy. Right? Okay. I want to share intimacy. I find a way to talk to her, exchange Instagrams, we text, we go out on a date. This is the process of a person chasing success. And it's very fun. While you're chasing it, until you've had it, it's super fun. This is a very interesting point. You must pin this point, everybody, because we'll come back to it. The process of the chase is super fun. The games are super interesting. Now it's happened. Now I'm meeting her in my bedroom for the first time. And we are about to have intercourse. For the lack of a better word. About to have intercourse. I can't believe you just said that, but... I could have said sex, but we're about to have intercourse. And we get into intercourse, if I'm lucky, 30 minutes later. If I'm bad, 5 minutes later. One of us, and it's mostly going to be me, will orgasm. Yeah. And that orgasm is the climax of a month, 2 weeks, 5 days, जितना भी time मैंने लगाया इस पूरे game में. And in that orgasm, what occurs for the first time in all of my life, hopefully not all of my life, but say all of my life, is that उस 8 orgasmic second के लिए मेरा दिमाग नहीं चल रहा. मेरे दिमाग में करने वाला और देखने वाला, again this is spiritual mumbo jumbo, करने वाला और देखने वाला अलग नहीं है. उन 8 सेकंड के लिए एक अद्वैत, a non-duality is created. And in effect, all this hard work I spent on acquiring this sexual experience was for these 8 seconds. This is Osho's premise for sex to superconsciousness. That what you chase with sex is those 8 seconds of orgasm when there is a non-duality. This is true for all desire. Effectively, spiritually speaking, what you're looking for, not materially, spiritually speaking, what you're looking for is that non-duality. Then the question is, फिर मैं क्यों भागूं success के पीछे? For the same reason कि तू लड़की के पीछे भाग रहा था. Because the game is so fun. Because the performance is insanely fun. That is why. Because और करने को क्या है? तो मजे करते हैं. And this is my brief understanding of success, non-duality, spirituality, and all these things combined. I wanted to talk about your Vipassana experience, because I know that just a few days ago you've come back from your second Vipassana retreat now, and you've done it once before. I have been willing to do it for years, and I know it doesn't happen at the willing level. You have to kind of make that commitment, which I'm hopeful that I'll make sometime in this year. We'll do it right now. Where is your mobile phone? Let's sign you up. Yeah, I know. I'll sign up probably. I think that is what it will take. That's what it took for me to start this podcast. Just tomorrow we are shooting. So the way I do it now, like now that I have resources, I'll have my assistant book it. I'll be like, मेरे को ना book कर दे, पूछ मत. फिर जब आएगा दिन कैंसिल करना होगा कैंसिल कर देंगे, बट कभी कैंसिल नहीं होता. I send people to Vipassana all the time. मेरी टीम में सब लोग Vipassana गए हैं. My girlfriend, who's Mexican, has been to Vipassana. In Mexico, I made sure she did go to Vipassana. My friends in America have been to Vipassana. In America, my friends in India have been all over the country. मैं सबको Vipassana भेजता हूँ. मैं 28 को बाहर आया, 28 जनवरी को, 31 जनवरी को my friend went in. 2nd February को my other friend signed up. 2 of my friends are like, I just make sure everybody's in Vipassana. And we can talk about the why of that later. But yeah, I've had 2 experiences. I think you need to book anywhere in months in advance क्योंकि मिलता नहीं है. So book it. It's free. If you don't want to go, if you don't have the time, cancel it. But I'm telling you, you will go. I know for a fact you will go. Yeah. Yeah. It always works like that. So what was your Vipassana experience? What made you go for the second time? What are the kind of realization one has when you are in a, I wouldn't say confinement, and I wouldn't say solitary also. You have people around you, but you don't even look in the eye, let alone talking and having access to phone and information, etc. So you're just there with your thoughts. Yeah. And maybe your teacher who's barely talking anything. No talking. What happens in Vipassana? No, let's also call it solitary confinement. क्यों glorify करें? क्यों नहीं बहुत इतना जेल है वो. ठीक है, और उसका पर्पस है. खुद से लेके बहुत कम लोग solitary confinement में जाते हैं. तो I think meditation becomes our own personally chosen
I wouldn't say prison confinement or something like, but it is something like that only. sure. It's just that vocabulary which gives prison a certain meaning Sure. or a certain connotation to it, and meditation a certain other meaning. But essentially, if you see, you're just with your thoughts, right? Okay, what I'm about to tell you, as far as my second Vipassana experience goes, is not a sales pitch because you will not buy this. Okay? And I tell this to everybody. What I will tell you is going to be horrible and painful. And when I tell you this, understand you will not have this. I've sent so many people, I've been there myself. I've had people who've gone 10 times. There were people who were there who've been many times to Vipassana. Nobody has an experience like I did. My experience was particularly painful. But we've established in the beginning pain is not bad. So, maybe you're able to put two and two together. I'll tell you. The first time I went, 2019 mein, I was in America, I was in New York. I had a couple of friends who'd been, and I took it as a challenge. I signed up as a challenge. Sign up करने के 1-1.5 महीने बाद, I acquired what therapists call depressive symptoms, not depression. They said, आपको depressive symptoms हैं क्योंकि I wasn't particularly feeling well. मैं अपने बिस्तर में लेटा रहता था, रोता रहता था. मेरी छोटी बहन आई हुई थी न्यूयॉर्क. मैं लिटरली ऐसे करता रहा एक्टिंग की. मैं सुबह स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, मैं निकलता था. शी वुड गो टू वट एवर टू सी साइट सी एंड वट एवर. मैं छुपा रहता था घर के पास. मैं वापस अपने रूम में आके रोता था क्योंकि मेरी कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं थी. और ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? हु नोज, किसको पता होता है. बट माई गेस इज टू सम डिग्री इम्पोस्टर सिंड्रोम बैक इन द डे. आई रिमेंबर, सो मैं गया था जुलाई 2019 में. अप्रैल 2019 में मेरे दिमाग में एक सेंटेंस फंसा हुआ था, यू आर लेजी एंड यू आर अ लायर एंड समथिंग ऑफ दैट नेचर. तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, मेरा पर्सनल न्यूरोसिस था. सबका अपना पर्सनल न्यूरोसिस होता है. But did someone say this to you? No. Or was it coming from an internal? Did someone say this to me recently? Maybe not, but has that sentiment been communicated to me through life? For sure. वरना कहाँ से आएगा? अपने आप तो निकलेगा भी नहीं ना. ऐसे नहीं आता. कोई जादुई ख्याल जादुई नहीं होते ना. तो I mean, and it's not even like somebody is to blame for. There is a certain way in which we acquire taste for reality. कुछ तुम बचपन में देखते हो, फिर तुम बड़े होकर देखते हो, फिर तुम्हारी अपनी सेल्फ असेसमेंट होती है, और इन सब चीज़ों में डिस्टॉर्शंस होती हैं जो कंपाउंड होती जाती हैं, और इन कंपाउंडिंग इफेक्ट्स एक साथ जब फटके निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं. बस मेरे को याद है, एक दिन मैं कॉलेज में चल रहा था, मेरे दिमाग में सेंटेंस आने लगा, फिर धीमे धीमे इट बिकेम क्राइंग सेशंस एंड लाइक लॉस ऑफ मोटिवेशन, एंड देन आई फेल्ट लाइक आई was not good enough to do anything. I think that was also around the time I was starting to do content, like podcasting ही कर रहा था. उसको लेके भी मोटिवेशन खत्म हो गई. आई गो टू अ थेरेपिस्ट, शी इज़ लाइक यू हैव डिप्रेसिव सिम्टम्स. आई सेड डू आई हैव डिप्रेशन? शी इज़ लाइक नो, यू हैव सिम्टम्स बट यू डोंट हैव डिप्रेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रेज इट लाइक दैट. तो मैं विपश्यना गया विद द सेम फीलिंग्स. आई हैड टेकन इट ऑन एज अ चैलेंज कि 10 दिन देखते थे, मेरे दोस्त कराए, मैं कैसे नहीं करूँगा. राइट, आई वॉज मच इन दैट जोन. मैं गया एंड दोज 10 days वर लाइक अ केक वॉक एज कम्पेयर टू दिस वन. उस 10 दिनों में था यार, बोर हो रहा हूँ, निकालो यार, ठीक है, मेडिटेशन बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं. आई लर्न क्वाइट अ लॉट विच आई हैव सिंस फॉरगॉटन. 4-5 साल हो गए. बट आई केम बैक एंड आई रिमेंबर उसके बाद भी 1-1.5-2 दिन थे जब मैं शिकागो में एक मोटेल की ज़मीन पे लेट के रो रहा था निकलने के बाद भी. पर फिर एक दिन वो गायब हो गया. मेरे को समझ में आ गया, लाइक आई कुड सी इट एट अ डिस्टेंस. अच्छा, ये ख्याल आ रहे हैं, इनके साथ डांस क्यों कर रहा है, इनको देख ले, let them dance, let them do what they're doing. And this is what they effectively teach. The silence creates a distance between you and your thoughts. And more specifically, it creates a distance between you. So अभी हम क्या होता है, मैं हूं, मेरे को ख्याल आया, मैंने एक्शन कर दिया. और उसको भी अगर डीपर समझना है, मैं हूं, पहले एक भाव आया, उसके ऊपर एक ख्याल आया और मैंने एक्शन कर दिया. ये सब कंप्रेस्ड एक साथ होता है. मैंने किसी को बोला तू कुत्ता है, उतने में उसने मेरे को थप्पड़ भी मार दिया. राइट, लाइक इट हैज ऑल हैपेंड टुगेदर. When you sit in that silence, what you realize is पहले मैं हूँ, मेरे सामने एक भाव आया. Which is feeling. हाँ, भाव इज फीलिंग. उस फीलिंग की वर्बल कंसोलिडेशन एक थॉट है, उस थॉट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन एक एक्शन है, और इन सब के बीच में गैप है. एंड द टेक्निक इटसेल्फ अलाउज यू टू स्टार्ट सीइंग दैट डिस्टेंस. एंड सो इवेंचुअली दैट हैपेंड. When I went this time, the reason I signed up was it had been too long and I was starting afresh in India. I was back here for good and I was like, okay, like, good reboot. I had a few questions I wanted to answer about whether I want to be here long term, whether I want to be there long term, what do I want to do in my life. I was like, ठीक है, बढ़िया है, जाके बैठ के देख के आते हैं. मैं गया और पहले 1-2-3 दिन में ना, ये 2 ही दिन में ये सारे क्वेश्चन आंसर हो गए. Day 3 मेरे को याद है, दिस विपश्यना, The second one, अभी. Day 3 was 20th January. I'm crying. I go to Guruji. I said, Guruji, मेरे को तो मेरी छोटी बहन की याद आ रही है. मैंने पूरी लाइफ में कभी ये बात नहीं बोली. मेरे को मेरी छोटी बहन की याद आ रही है. मेरे को ऐसा लग रहा है पूरी ज़िंदगी निकल गई, मैं तो उसके साथ बैठा ही नहीं हूँ.
तो गुरुजी ने बोला ठीक है 7 दिन बाद बैठ लेना। मैंने बोला गुरुजी ये तीसरा दिन है, मैं तो अभी से मेंटली टूट रहा हूँ, मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं? कहते टेंशन मत लो, 3 दिन निकल गए, 7 और निकल जाएंगे। ओके। Day 4 they teach you Vipassana. पहले 3 दिन you do Anpan, which is breathe in, breathe out. Day 4 you start learning the technique of Vipassana, which you best learn from them rather than me. And Day 5 when you learn Vipassana, तब अंदर से एक्चुअल वोल्केनो फटने शुरू होते हैं। तब तुम्हारे अंदर के सारे घिसे पिटे जो तुमने दबा रखे हैं ना, जिनको तुम काम कर करके, बातें कर करके, इंस्टाग्राम पे रीले हाँक हाँक के दबा देते हो, सिगरेटें पी पी के दबा देते हो, वो सब धीमे धीमे निकलना शुरू होता है। सक्सेस की चाह में भागते भागते दबा देते हो, वो निकलना शुरू होता है। Day 5 in the morning I wake up and my senses are so fine at this point कि मेरे को पता नहीं कितनी दूर हनुमान चालीसा चल रही है, किसी मंदिर में सुनाई दे रही है। बट अब जब अंदर के विकार, डिस्टॉर्शंस, लर्नड बिहेवियरल पैटर्न्स खुलने लग रहे हैं, तो पता नहीं अंदर कौन सा दबा हुआ डर साथ में निकल रहा है। मेरे को अभी तक पता नहीं है ये डर है। मैं उठता हूं सुबह 4, 4:30 बजे, दूर हनुमान चालीसा की आवाज आ रही है, मेरे को नहीं पता है हनुमान चालीसा, मेरे को आवाज आ रही है, मेरे को लग रहा है मेरे कान बज रहे हैं, मैं पागल हो रहा हूं। एंड सो आई वेक अप विद एंग्जाइटी, स्ट्रेट प्योर वाइल्ड एंग्जाइटी। और मैं उठ के भागता हूं कि मेरे को लोगों के आसपास होना है, क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, अच्छा अंधेरा, धुंध अलग से है, क्योंकि सुबह का वक्त है, 4 बज रहे हैं, धुंध वैसे हो रखी थी दिल्ली में उस टाइम। मैं भागा लोगों के पास कि मैं कहीं भी रहूं, लोगों के आसपास रहूं, मैं अकेला नहीं रहूं। और मेरा माई हार्ट रेट मस्ट हैव बीन 130, आई एम गेसिंग, इनसेन। मैं मेडिटेट कर रहा हूँ कि ये शांत हो किसी तरीके से, ये शांत हो किसी तरीके से, विच बाय द वे इज ऑल्सो एन ऑब्स्ट्रक्शन, बट वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। सो फिर वो शांत होता है, मैं गुरुजी के पास फिर जाता हूँ, मैं कहता हूँ बॉस मेरी तो लगी पड़ी है, मैं नहीं बैठ सकता, मेरे को नहीं बैठा जा रहा। और ये तब है जब मैं कर चुका हूँ, जब मैं हजारों लोगों को भेजता हूँ। कहते कोई नहीं बैठा रहे, करता रहे, देख ले, दे विल टेल यू वॉच व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट वॉच। और करने को क्या है, 5 और दिन है, बैठा रहे। ठीक है। Day 5, I go into my room 9 p.m. after everything is done. So you meditate starting at 4:30 a.m. all the way until 9 p.m. 9 p.m. I go into my room. पूरा दिन ठीक निकला है आफ्टर द अर्ली सॉर्ट ऑफ बाउट ऑफ एंग्जाइटी। रात को 9 बजे फिर एंग्जाइटी निकल के आती है, और इतनी वाइल्ड निकल के आती है कि मैं अगले 7 घंटे सो ही नहीं पाता। फ्रॉम 9 to 4 आई एम अवेक एंड मेडिटेटिंग बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तुम बात कर नहीं सकते, कुछ पढ़ने को है नहीं। कितनी बार अपने मॉइस्चराइजर के पीछे का रैपर पढ़ोगे, क्या कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें, वही 2-4 बातें लिखी होती हैं, यहाँ मैन्युफैक्चर्ड दिस दैट, यू हैव नथिंग टू डू। सो आई एम जस्ट मेडिटेटिंग एंड द एंग्जाइटी इज जस्ट ग्रोइंग, लाइक आई फील लाइक माई हार्ट इज गोइंग टू पॉप आउट। मेरी पूरी बॉडी, इट्स लाइक समबडी इज बीटिंग मी विद अ बैट, कोई हथौड़े मार रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप क्या, लाइक एवरीबडी एल्स वेक्स अप। आई गो टू गुरुजी, आई एम लाइक बॉस आई नीड अ डॉक्टर, I don't know what is up with me. I have insane anxiety that I did not even know I had. I need to go home. I need a doctor. I don't need meditation. Guruji looks at me. He's like, look, if you go out and you go to a doctor, they'll give you pills. And those pills will at best suppress your anxiety. यहाँ बैठा रहे, हम eradicate कर देंगे। अच्छा, तो ये जो गुरुजी होते हैं ना यहाँ पे, इनकी ना वाइब बड़ी अलग होती है। Like their sort of sensibilities and the way they talk is so relaxing. Yeah. I believed him. You feel like listening to them more and believing them. Yeah, I believed him. I said ठीक है, मेरे को रात को सोने का कोई इलाज करो मेरा, क्योंकि अगर ये दोबारा हो गया कौन ध्यान रखेगा मेरा। He's like तेरे को रात को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाइयो। I was like okay. मैं रात को किसी तरह गया, मेरे को किसी ने, गुरुजी के कोई एक सेवक ने बताया कि पैरों पे सरसों का तेल लगा ले, नींद आ जाएगी। मैंने लगा लिया, मेरे को नींद आ गई। 1-1.5 घंटा सो लिया मैं, अच्छा लगा मेरे को, वाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम मच मोर रिलैक्स्ड, right? But throughout the day, I have these moments where suddenly something erupts. It comes on, I see it coming on, I see the fear, I see everything is now making me afraid. I'm like, oh my God, कुछ हो जाएगा, घर पे किसी को कुछ हो जाएगा, मैं यहाँ पे कितने सालों से बंद हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। Complete fear, everything is fear. ये लोग क्या करना चाहते हैं? Everything is inciting this sense of fear. But now, I can see it. कि ये actually डरने की वजह है नहीं, ये तो मेरा दिमाग क्रिएट कर रहा है, right? Day 6, Day 7, Day 8, I jump between these very fearful moments where I can completely tell, like Day 6 मेरे को realize हुआ, अच्छा ये anxiety भी नहीं है, एक absolute loss of control पे you have this feeling. When you are not in control, when your body behaves in a way you do not want it to behave, you have this feeling. I was like, okay, I get it. Day 7 I realized it's not even that, it's a feeling of overwhelm that you haven't felt in a long time that you're not able to digest. So every time the glacier of anxiety grew a little smaller. It kept growing a little smaller and I could see, अच्छा ये anxiety भी नहीं है, ये
लॉस ऑफ कंट्रोल है, लॉस ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, ये ओवरवेलम पे रिएक्शन है तेरा, लाइक यू नो ऑल दीज टाइम्स. डे 7 डे 8 आई हैव दीज इनसेन यूफोरिक मोमेंट्स ऑल्सो, लाइक प्योर, जैसे ब्लिस मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, लाइक गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाना, प्योर ब्लिस, लाइक माई बॉडी इज कंप्लीटली ब्लिसफुल. और उन मोमेंट्स में भी मेरे को बड़ा क्लियरली याद आया, वाज लाइक ये अभी चला जाएगा, इसको चिपकना नहीं इस फीलिंग के साथ, इसकी चाह मत करना, इसकी चाह करोगे वहीं फंस जाओगे जहां से निकल के आ रहे हो, देखते रहो आ रही है फीलिंग, बढ़िया है. So I would swing between that. Nights were always tough. Nights were tough because it was cold. The coldest days in Delhi. I was locked in a small room and like, you know, there's nothing to do at night. दिन में तो फिर भी meditate कर लो. Day 9, I'm meditating early in the morning and then again it strikes. And this time it strikes loud. And I remember the way it came almost like duk 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 पूरी body में. I'm like ठीक है आ रही है, हम बैठ के देख रहे हैं, हम meditate कर रहे हैं, हम meditate कर रहे हैं. And this time it came with shame. I was like, ऐसे कैसे बाहर जाऊँगा मैं, कैसे शक्ल दिखाऊंगा अपने घर वालों को, हाउ विल आई लुक एट माई पेरेंट्स एंड बी लाइक आपका बेटा इतना एंक्शियस है और किस बात के लिए, ये तो पता ही नहीं है उसे. एंड सो द नेक्स्ट 1.5 day until you start speaking on day 10, I dealt with that part, dealing with the fact that I have parents and my parents are growing older and that I must take responsibility more and more, and this broken version of Prakhar is unacceptable in that way to his parents, right? When I came out, I didn't have my phone. Somebody else did. I called up my mother and I cried for like 45 minutes, maybe 30 minutes. I was like, I didn't think I'd see you ever again. I didn't think I'd get to talk to you. Really, I did not. Beach mein, there were complete days where I thought, मेरे को मेरे parents कभी वापस नहीं मिलेंगे. And that I've wasted my life. And every day, you know, when I would had that thought, मैं आसपास देखता था, बूढ़े भी लोग थे, मेरे से कुछ जवान भी लोग थे, and I'd be like, इनमें से कितनों के तो हैं भी नहीं, मेरे तो हैं, और मैं फिर भी वेस्ट कर चुका हूँ ये सारा टाइम चेजिंग आफ्टर ऑल दिस नॉनसेंस. मैं उनके पास बैठता भी हूँ तो 2.5 मिनट फिर काम करने निकल जाता हूँ, और ऐसा कोई काम भी नहीं हो रहा रात को 11 बजे कि मैं उनके साथ 1 घंटा और नहीं निकाल सकता. कहाँ भाग रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ थोड़ी देर तो तुम्हें अपनी बहन को भी देने हैं, थोड़ी देर अपने माँ बाप को. एंड सो लाइक ऑल दीज फीलिंग्स वर हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द अनकॉन्शियस. सो ऐसा नहीं होता कि तुम्हें पता होता एग्जैक्टली क्या हो रहा है. आई केम बैक, आई केम आउट एंड आई हैव नेवर फेल्ट बेटर, जेन्युइनली, इन टर्म्स ऑफ माई वर्क, इन टर्म्स ऑफ माई परफॉर्मेंस. ऑनेस्टली जब से मैं वापस आया हूँ मेरा काम भी फटने लगा है, कुछ अचानक से अपॉर्चुनिटीज भी और आने लगी हैं, विच वी डोंट हैव टू गेट इनटू, दैट्स ऑल मिस्टिकल स्टफ, बट bloody brilliant. I've come back the happiest I've been in my life. Those 10 days were probably years worth of unprocessed shit, just snap, deal it. And the good thing I will say, I'm lucky in this way that I have an insane willpower. क्योंकि अगर मैं शायद क्विट कर देता ना तो मैं साइकाइट्रिस्टों के चक्कर काट रहा होता. अच्छा हुआ मैं गुरुजी की बात सुन ली, अच्छा हुआ मेरे को ये पता था कि जब डर लगे तो सामने आंखों में गाड़ के देखो, आजा. अच्छा है कि मेरे को ये पता था. बट लोगों का एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं होता. मेरा दोस्त अभी वापस आया, कह रहा भाई चिल था, बढ़िया, शांत रहे, 1-2 दिन ये सोचा, 1-2 दिन ये सोचा. मेरा एक्सपीरियंस काफी टेरिबल था. डिपेंड करता है ना उस इंडिविजुअल की क्या जर्नी रही है, उसका पास्ट क्या रहा है, व्हाट इज ही लुकिंग फॉर टुडे इन हिज लाइफ, और किसका क्या आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ. हम में से कई लोग बहुत सीरियसली ये लाइफ का गेम खेल रहे हैं और कई लोग बहुत ऊपर वाले प्लेन पे खेल रहे हैं. पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट कई लोग बहुत डीप घुस गए हैं और उसी में घुस के ना उलझ के रह गए हैं. और कई लोग बस ऊपर ऊपर से हाँ फन है, चिल है, मस्ती हो रही है, काम हो रहा है, ये हो रहा है, उस पर खेल रहे हैं. So you eventually don't know which is the best way to play this game. But yeah, our own individual anxieties also depend upon, again, how we process these things and what cards we were dealt with. This is one of the deeper lessons I've gotten out of this Vipassana experience, because I think the anxiety came out of desiring success for me. Yeah. This is my guess, because मेरे को नहीं पता था ये अंदर दबी हुई है, right? मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मजे चाहिए, और सक्सेस थल्ले से बैठ के आएगी, आती भी है, आई भी है, और सभी की ऐसे आती है. You have to be lost in the process of doing what you're doing in the present moment, and then success is truly a byproduct. Excellence is okay, fun is okay, masti is okay, peace is okay, that's all good. Yeah. Success is a blind man's chase. Safety is okay. Yeah. Security is okay. Yeah. Success is a blind man's chase. This is a beautiful phrase I heard from Osho. कहते ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई और दुनिया बना के मोहित हो गए. The creator himself creates the creation. Yeah. And is infatuated by it. He's like, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है. तुम अपनी इच्छाएं बनाते हो, अपने डर बनाते हो, अपने भय, अपनी एनवी, अपने दुनिया भर के इमोशंस अपनी रियलिटी में डालते हो और फिर उसी में मोहित होकर भूल जाते हो कि ये तुम्हारी क्रिएशन है. द वे यू लुक एट द वर्ल्ड इज योर क्रिएशन. इसको आप पर्सपेक्टिव कह रहे थे, मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको. ऑल दीस साइकोलॉजिकल मैप, ऑल दोस वर्ड्स, ये सब वोकैबुलरी है. Right, बेसिक इवेंचुअल जो एक बेसलाइन है वो सेम है. राइट. एंड सो द ट्रबल इज
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा मत खेलो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मत भागो उन चीज़ों के पीछे, मैं कह रहा हूँ उन पे बिक मत जाना, क्योंकि जहां तुम बिक गए ना, वो मिलने के बाद तो क्या, मिलने से पहले, मिलने के कई साल बाद, मिलते वक्त भी खुशी नहीं देगी। तब लोग ऐसी बातें करेंगे, भैया बच के, पनौती है, आपसे छिन ना जाए। अब मैं डरूं इसके लिए? फिर फायदा क्या? फिर नहीं दो, फिर तो मैं रंग ही ठीक हूं, फिर तो मैं गरीब ही ठीक हूं, फिर तो मजे तो हैं एटलीस्ट लाइफ में, तब मेरे को टेंशन तो नहीं है मेरे से चली जाएगी। Prakhar, we have spoken so much about success. My idea of this conversation with you was to talk about the art of conversation, because Okay. that is what you kind of teach people Yes. through your course, and that's what you've written a book on, how Yes. to talk to others so that they listen to you. Right. So let's talk about art of conversation also, because a lot of people out there are struggling with communication skills, and that's a very surface level conversation, because nowadays I feel a lot of people are going to decent enough schools and they're still picking up on things, they're still reading, information has become accessible and all of that, but knowledge is not leading to transformation in any area of our life. मैं सिर्फ communication की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ के सभी एरियाज में हमें knowledge तो होती है कि what we want to do और क्या करने से क्या होगा, लेकिन that doesn't lead to transformation. Let's say if I know what I need to do to lose 10 kgs of weight, but it's not leading to my transformation. Similarly, I know what I need to do to make my communication skills more better, but it's not leading to my transformation, that me becoming a good communication skills person. So what are your ideas there and tips there that you can kind of first hand give it? एक तो तरीका ये है कि तुम्हारे दिमाग में जो चैटर है ना, उस चैटर को हम हटा दें। और वो चैटर जनरली क्या है? हिस्टोरिकली एक्वायर्ड लेबल्स। मेरे को बचपन में किसी ने बोल दिया तू मोटा है, मेरे को बचपन में किसी ने बोल दिया तू बोरिंग है, मैंने उसको दिल पे लगा लिया, उसको मैंने अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया। और कैसे? मेरी ईगो का पार्ट वो कैसे बना? मैं प्राउड थोड़ी हूं कि मैं मोटा हूं, मैंने उसको अपनी ईगो का पार्ट बना लिया, उसको रिजेक्ट करके। नहीं नहीं, मैं मोटा नहीं हूं, नहीं नहीं, मैं बोरिंग नहीं हूं, मैं होना नहीं चाहता, मैं डरता हूं बोरिंग होने से, मैं चाहता नहीं कोई मेरे को बोरिंग बोले, मैं चाहता नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो। एंड नाउ इट्स स्टक इन योर साइकी, नाउ इट्स स्टक इन योर साइकी। सो व्हेन यू गो आउट टू टॉक, you are afraid that you might sound boring. And here is the secret: what you think of yourself is what people will eventually think of yourself. This is rule number 1 of communication conversation. It does not begin with proper pronunciation. English is completely irrelevant. It is not nothing to do with money or high society or South Delhi or South Bombay or देखो ये लोग कैसे बात करते हैं, none of that nonsense. It begins with what you think of yourself. और अगर तुम्हें इस चीज़ को actually देखना है ना, वो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स जो धारावी से उठ के आए हैं, उनको देख लो। वो उतने ही स्टार हैं जितने हाई सोसाइटी इंस्टाग्रामर्स हैं। अब तो टिकटॉक भी इंस्टाग्रामर्स हैं। वो उतने ही स्टार हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो स्टार्स हैं। व्हेन दे वॉक इनटू रूम्स दे फील लाइक द रीजन व्हाई दिस पार्टी इज हियर इज देम। या अपन का ही है। एंड इट्स अगेन लाइक उसमें कोई समटाइम्स देयर इज एरोगेंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टी मेरे लिए ही है। बट भाई पार्टी तो मैं वही इंजॉय करूंगा ना जहां मैं हूंगा। इन लोगों को फन देने का काम मेरा है। आई एम हियर टू मेक श्योर शोभा हैज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद मी, राइट? एंड सो दे ओन देयर प्रेजेंस इन दैट वे। So the first thing I tell you is really sit down and ask yourself, क्या obstruction है? ऐसा क्या भारीपन है जीवन में? क्या रोक रहा है तुम्हें खुलने से, खुश होने से, चिल्ला के बात करने से? एक कम्युनिकेशन कोच है, पता है, वो एक्सरसाइज कराता है अपने वर्कशॉप्स में। वो लोगों को बुलाता है, कहता है चिल्लाओ, कह रहा है चिल्लाओ, और लोग चिल्लाओ। I think I know of this. Julian? Yeah. You know Julian, right? Julian, yes. Right. मुंह से निकलता ही नहीं है। और क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि डर है। कहाँ है? बचपन में। बचपन में पापा ने डांटा था चिल्लाने के लिए, मैम ने कहा था शट अप, हेंस द टाइटल डोंट शट अप, राइट? बिकॉज द imposition on you that you must shut up for behaving well is just stupid. Well, I'm missing out on all the golden things you might have to say. Secondly, the trick is not in what you say. Never. And the trick is also not in how you say it, because that's also how do I say it? Pata nahi. The trick is in how you feel. So people who've seen me on many podcasts may find कि प्रखर इस पॉडकास्ट में शांत है, right? And so by proxy शोभा इस पॉडकास्ट में हो सकता है शांत, तो मेरे को पता नहीं वो ज़्यादा बात करती है कि नहीं। बट अगर मैं बड़ा एक्साइटेड फील कर रहा होता आज, तो मैं आता शोभा ये हाय हेलो, और दैट वुड हैव रेज्ड योर एनर्जी एज वेल। एंड नॉट जस्ट योर एनर्जी, द वे आई फील silent and peaceful right now, you feel silent and peaceful when you talk to me. It's always an energy exchange. 100%. And so, or an emotional exchange. So the trick is in how you feel. Now the trouble with how you feel is that your emotions are repressed. I do this exercise in my workshop. मैं बोलता हूँ लोगों को, and in fact let's try this right now. So Shobha, can I? Yeah, okay. Let's so go close ahead. your eyes. Okay. I'll give you a little bit of a meditative instruction for 10-15 seconds, and then I'll ask you to feel an emotion and say a very simple sentence. My name is Shobha. Shobha, close your eyes. Take a deep breath in. 1, 2, 3,
4. Pause, hold, hold, hold. Release. 4, 3, 2, 1. And with your eyes closed, go back to a moment in life where you felt very, very angry about something. And with that anger inside you, say, "Hi, my name is Shobha." Say it out loud. Hi, my name is Shobha. And you see the difference? Immediately, do you feel it inside you? Yeah. And so when I do this exercise, particularly when I do the anger segment, more people will say, नहीं निकला. क्यों? क्योंकि बचपन में मार मार के निकाल दिया सबने गुस्सा. सबने बोला गुस्सा नहीं करना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, गलत है, गलत है. और तुमने गुस्से के अराउंड डर पाल रखे हैं, गुस्से के अराउंड शर्म पाल रखी है. Then I do the second leg of this. Let's try that. You go in 1, 2, 3, 4. Hold, 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 hold. Release. 4, 3, 2, 1. Now with your eyes closed, go back to a time in your life where you were very sad about something. Something had just happened that had broken your heart. You were very sad about it. And with that sadness say, "Hi, my name is Shobha." Hi, my name is Shobha. And so sadness, I found, people are able to express with slightly more success than anger. And then I do the third one. We'll do that. So close your eyes. 1, breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold, 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 hold. 4, 3, 2, 1. Now go back to a time in your life where you felt very happy. Something beautiful had just happened. Something great, fantastic, exactly like you wanted. And with that happiness in your voice, say, "Hi, my name is Prakhar." Hi, my name is Shobha. And the magic occurs. Because happiness is so much more easier to feel. And so the second tip I have for you, beyond presence, is let your emotions be your biggest strength. Right? And then we can get into the depths of stuff. For instance, I think communication is a farce. You never really communicate. You always converse. And there's a huge difference. So there is a model in my workshop called the QASW model. And the QASW model is, if I were teaching you how to communicate, I teach you how to ask questions. So if I said, and I don't know enough about you, so I'll ask. And we'll pretend like I don't know your name. So what's your name? Shobha. Shobha, what do you do? I am hosting this podcast right now And how long have you been doing that? for 15 months. And what is your education like? I am an engineer and also a yoga graduate. Okay, and where do you live? Gurgaon. And now you will find that I'm suddenly in an uncomfortable spot. I don't know what to ask. What next. next to us? And this is the trouble with teaching you how to communicate. Because if I teach you how to communicate, I teach you one-way communication. And it does not factor in what you might have to say. What do I ideally want is for you to be invested in this. So let's try this again. Hi, what's your name? I'm Shobha. That's a very beautiful name. Who gave you that name? Was it your mom or your dad? It was my mom actually. Yeah? Yeah, because my grandmother, she named me as Santoshi. So my mom thought it's a very outdated name for that time. And she thought Shobha was a very in name, which I still feel my friends have grandparents. Those are this name. So I don't know what she saved me from. I feel Santoshi has become cooler these days. So I wish my grandma would have, that name they would have kept. Yeah. You see how the difference is? Yeah. Because instead of just asking question, answer, question, answer, question, answer, leading it to a place जहाँ पे you are stuck against the back of a wall, you're like, भाई प्रखर को क्या हो गया? इतने सवाल क्या चाहता है ये इंसान इतने सवाल पूछ रहा है? All I did was after every answer you gave me, and we only had to do 2 rounds. Yeah. I gave a statement, like I said, Shobha is a beautiful name, and I waited. The first time I waited, you didn't know what to say. The second time I was like, who gave you that name? And you were like, my mom. And I was like, yeah. And then suddenly you burst open because people want to talk to other people. You just have to find a way to let them in. If you think of, say, Kshitij, my friend who's already been on the show, shout out Kshitij, you're brilliant. I may have lost... You have watched the episode? A little bit. Yeah, but I cannot stand Kshitij's... Come on, he's such a... No, he's brilliant, but... He's such a beautiful person. कब हम औरतों के बारे में बात And the करना kind बंद of करेंगे? comments हमें ऐसा उस episode पे आ रहे हैं कि this man is this and that and blah blah blah. He is the virgin's Jesus. Look, I can say all of this because I actually share this equation with him, right? Yeah. But to have that equation with him, I've lost 9 other people.
And so it's okay if I get a great friend in him and have lost 9 friends in the process, publicly, privately. All good, dude. All good. All backstabbing's fine. All people taking advantage. 10,000 रुपए ले लेगा, रख ले. चल अब मैं यार, यही वो वाली बात है. सक्सेस मिल भी जाए और फिर मैं डरा रहूं कि ये चली जाएगी, तो ऐसी सक्सेस से तो गरीबी ठीक थी. अब दोस्ती चाहिए भी, पर मैं डरा रहूं ये मेरा फायदा ना उठा ले, इससे बढ़िया तो अकेला ही ठीक था. अच्छा, मेरे साथ इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज हुआ दैट बचपन से आई हैड हर्ड माय मॉम सेइंग कि फ्रेंड्स फायदा उठा लेते हैं और पैसों को लेके बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करो. ऑब्वियसली कंडीशनिंग बन गई. और जब मैं अपने इन सारे फिल्टर्स को ब्रेक डाउन करी थी, मैंने कहा यार ये फिल्टर मैंने लगाना ही नहीं है. तो इस प्रोसेस में ऐसा हुआ भी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही टुक मनी फ्रॉम मी इन 3 or 4 इंस्टॉलमेंट्स, सम 10 लाख रुपीज. दे भी दिया मैंने कुछ, हम साथ में बिजनेस धंधा करने वाले थे. गायब. ठीक है. और मेरा 10 साल पुराना दोस्त, एंड घर पे आना जाना, दोज काइंड ऑफ रिलेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, एंड गायब हो गया. लेकिन मुझे आज सच में ईमानदारी के साथ आई एम टेलिंग यू, मेरे दिल में 1% मलाल नहीं है. उससे वसूली करवा दे. नहीं, मुझे नहीं कर, मुझे होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल में 1% भी मलाल नहीं. बिकॉज उस प्रोसेस में जो मैं इंसान बन गई हूँ ना, वो जो ऐसे ही दे देती है, जिसको कोई परवाह नहीं पड़ी है, वो फीलिंग इतनी अमेजिंग है. और वो इतनी, आपके ना खुद के प्रिजन होते हैं जिसमें आप केज हो जाते हो, वो उसको तोड़ रही हो सारे शैकल्स को. तो मुझे वो बड़ा सही लगता है यार कि ठीक है यार, कई लोगों में से किसी ने उठा लिया फायदा तो उठा लिया. A lesson worth 10 lakh rupees is not really that That's expensive. okay. I mean, ठीक है. I'm saying it because शायद मेरी पॉकेट वो अलाउ करती थी. By God's grace, maybe I had that money that I could part ways with it with that much peace. लेकिन honestly, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास शायद 1000 करोड़ हैं, पर वो उनके लिए 10 लाख आज भी बहुत मायने रखते हैं. तो ये सब पर्सपेक्टिव्स हैं जो मैंने बिल्कुल अपने लिए ब्रेक किए. मतलब इन कुछ जगहों पे लाइफ में मैंने अपने लिए ब्रेक थ्रूज कॉज किए हैं. एंड प्रिंसिपली मैं सोचता हूँ, अगर दोस्तों को दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो पैसे, ऐसे तो वापस नहीं लेने. तो तुम दोगे भी उतने जितने तुम्हें वापस की कोई इच्छा नहीं होगी. आई हैव फ्रेंड्स जिनको मैंने उनके बुरे वक्त में पैसे दिए हैं, मैं तो भूल भी गया कितने थे. तब तो मेरे पास भी कुछ नहीं होते थे. बट मनी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मोस्ट पीपल हैव. या I like to talk about it with people on my podcast also. कुछ लोगों से मैंने पहले ही बात किया. I want to hear your thoughts also. On what? On money. What is your relationship with money and how does one heal their relationship with money? क्योंकि हम लोग money के बारे में इतने limiting beliefs, हम लोगों की life के बहुत सारे areas में limiting beliefs होते हैं, fallacies होती हैं that we live our lives with, right? But money is one area where a lot of people, majority of people are stuck. So what is your thought there? I've made a lot of money in life, luckily, fortunately. I think that has very little to do with me and a lot more to do with Sri Krishna, because karmanyavad ka raste is something I try to live by. Genuinely speaking, right? Like the minute I start thinking the money is my cause, all the money I've lost also is my cause, and that's just not a good place to be. So neither is this. मैंने काम किया है, पैसे बहुत आए हैं. पता नहीं इंटरनेट पे कितने लोगों को हिस्टोरिकली याद होगा, बड़ा शोर मचा था एक टाइम पे कि प्रखर तू इतने पैसे बनाता भी है जितने का तू डेफेमेशन केस फाइल कर रहा है. हाँ, तभी तो किया था. और उसके बाद मैं उतने ही पैसे लूज भी किए हैं इन लॉसेस बिकॉज ऑफ पब्लिक रिएक्शन. आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. फ्रैंकली, लूजिंग मनी वाज uncomfortable but not that painful. A lot of it has to do with how I was raised. A lot of it also has to do with the fact that my family does not need me to make money. They're very successful people themselves. So there is a realistic component to it and an idealistic component to it. I think money is a very solid facilitator. देखो, मेरी किस्मत है that I was born into a family of overachievers. My dad's a lawyer, my mom's a judge, my brother's a lawyer, my uncle's a huge individual in his own right. I don't know what is the best way to describe him, but investor, financial, wealth manager, whatever. Right? Everybody around my family, every single human. मेरे भाई की शादी है कल, जितने लोग वहाँ होंगे ना, सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं. मैं तो शायद सबसे छोटा आदमी हूँ दूर दूर तक, right? And so very quickly I saw what it means to have a good car. Very quickly I knew what it means to spend endlessly on whatever you want. My father raised me with very middle class morality because he grew up very poor. तो मेरे को पैसे नहीं मिलते थे. मेरे को पता ही नहीं था कि my dad does well in his job until very much later in my life. But I knew, अच्छा ठीक है, अच्छी गाड़ियाँ ऐसी दिखती हैं, अच्छा international trips ऐसी दिखती हैं, जो लोगों की इच्छाएं होती है ना. I'd seen that very early on. Then I got the freedom also. So traveling around the world, going to all these insane parties, yacht parties, raves, everything, right? Then girlfriends, all of that. Stuff that money can buy. I maxed that out. Money for me is not about spending it on myself. Money for me is making sure my sister never needs nothing. My wife will never need nothing because she'll live with me. My sister will still live far away from me. If she needs anything, मेरे को सोचना ना पड़े. And this is the analogy I use with money. Become the largest tree under which the most amount of people can find shade, which my father was for the rest of the family.
My father's family grew up very poor. My Dadaji did as much as he could, and he was burdened quite a lot. But my father was the most successful of all his siblings and cousins. And almost nothing happens without the contribution and the humility of my father. पापा कभी क्रेडिट नहीं लेते और हमेशा उनका हाथ रहता है चीज़ों में. And if I can just do that, मैं बहुत खुश हूँ पैसे के साथ. क्योंकि like I said, right, I had friends who were literal billionaires. I have friends जिनके न्यूयॉर्क सिटी अपार्टमेंट्स में अंदर बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं. I have friends जो एयरलाइंस ओन करते हैं, अपनी प्राइवेट जेट्स फ्लीट्स है जिनके. वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है, मतलब एक बार जेट में बैठने में अच्छा लगता है, एक बार ही यॉट पार्टी में मजा आता है, दूसरी बार फिर वही करने आ गए, सफेद कपड़े पहन के वही टकीला ठूस हो गए, लाइक समझ रहे हो. तो द एंड गोल देयर इज नॉट मनी. वेल, आई विल से one very interesting way to think about life problems is what is a money problem and what is not a money problem. Correct. Right? तो for instance, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ रहना है. मैं कहता हूँ कहीं भी रहो. If we have the money, flying to India is just 15 hours ना. अगर हम न्यूयॉर्क भी रह रहे हैं, just by business. The only trouble is we don't have that money. So it's a money problem. It's not an existential problem. So I want to make enough money where I don't have to bother with money. I'm okay losing money in the process because if I'm not risk taking, I'm an idiot. I believe in reinvesting all the money I make back into my business. So I haven't truly claimed a substantial salary from my own business since 2021. मैं 20-25 हज़ार रुपए लेता हूँ अपने business I'm से. waiting for that day to happen for me to claim salary from my own business. But मैं मतलब वो for accounting Yeah. purposes I'll claim a little bit, but Yeah. for the most part I don't claim any money. I put it back into the business. I'm like hire more, get better equipment. My priority, although money is a priority because you know kids and whatever, and I plan to have kids soon enough, you know. But Prakhar, you're revealing a lot of plans. I don't mind. I'm very honest. Like, Yeah. अगर घर वालों को बता दिया फिर दुनिया को बताने में क्या दिक्कत है? Right? Like I'm Correct. very honest with that kind of stuff. Yeah. But like kids is something I think about, so money is a concern like that. But my first concern is to build something very impactful, something huge, something that falls in line with my spiritual access, something that I love doing day in and day out, something I can get lost in doing, and you know it's big. Then from there, money will sort itself out. It always works like that. That's how I think about money always. And अगर किसी like if my friend उसका बर्थडे है तो चल तेरी पार्टी मैं थ्रो कर देता हूँ. Like if I have the money for that kind of stuff, brilliant, it's so good. Yeah. क्योंकि फिर तुम उसे गाली भी दे सकते हो ना सारी रात, मेरे पैसे की पी रहा है, चल साले. No, I've seen money does buy you, you know, Safety. these kind of safety also. वो तो given ही है. Yeah, I think I have a very straightened relationship with money, but I've seen that the most amount of stress I get from is also money. Prakhar, I also want to talk about taking a stand for yourself. You know, you seem to be a person who is okay with owning up who he is, owning up to who he is, and being who he is, and taking a stand for what your likes and dislikes are. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है that they are not able to take a stand for themselves. चाहे वो अपनी career choices को लेके हो, अपने partners को लेकर हो, अपने clothing choices को लेकर हो, अपनी society जिसमें भी वो रहते हैं, उसके किसी भी challenges को break करने को लेकर हो. So basically what I'm asking is, how can people take a stand for themselves? Okay. I think it's not... See, the access points to taking a stand for yourself are varied. मैं पूरी चेन में कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ इस बारे में बात करना, और एक्चुअली इसकी डेप्थ में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ क्योंकि हम घुस सकते हैं, राइट. पहले मैं बताता हूँ द डाउन साइड ऑफ नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. ऐसा नहीं होता कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे और वो चीज़ चली जाएगी. आप जब एक एक्चुअल उभरती हुई चीज़ को उभरने नहीं देते ना अपने मन में, आप उसको दबा देते हो तो वो और स्ट्रांग हो जाती है और फिर घूम के आती है. There's a very interesting story about a friend जिसको बचपन में किसी ने कुछ बोला, थोड़ा बहुत उसके साथ बदतमीजी हुई, ठीक है, वो चुप रहा, डर गया, बच्चा था कि सब होते हैं, सबके साथ होता है. उसने कभी नहीं निकाला. जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, जब भी ये सिचुएशन होने लगी, बाय नेचर वो दबाता गया, फिर वो फट के अपने आसपास वालों पे निकलने लगा. उसको हर तरफ वो चीज़ दिखने लगी. वो जहाँ देखता था उसको दबना दिखता था, तो वो जहाँ पे कंट्रोल था, जो कि घर पे था, वो निकालने लगा. ये स्टोरी है सारे मर्दों की, ठीक है, सबके पापाओं की, सबके भाइयों की, सब मर्दों की. तो द टॉक्सिसिटी, जो कंटेमिनेशन, जो मैल अंदर दबाने से आता है ना अपने आप को, उससे बुरा मैल वैसे भी कुछ नहीं है, पहली बात. तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है, अगर आपको एक होलसम, आपको प्रॉपरली जीना है ना खुल के, तो निकालना बड़ा ज़रूरी है आपके मन में जो है, पहली बात. दूसरा, अब उसे करना कैसे है को लेके हम एंडलेसली बात कर सकते हैं. सबसे धक्का मार बात, सबसे सत्य बात, अगर मेरे को अभी यहाँ से भाग के जाना है और लास्ट बात बोलनी है, तो वो ये है, लड़ाई कर लो. लड़ाई को लेके अपना जो नज़रिया है वो बदलो. लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मैंने सामने वाले को दुखी कर दिया. हाँ, टेम्परेरीली,
टेम्पररी सुखी भी करता हूँ, Yeah. फिर वो सुखी होना बंद हो जाते हैं, Yeah. तो वो दुखी होना भी बंद हो जाएंगे. अगर वो दुख को पकड़ के बैठे रहे तो उसमें मेरी गलती नहीं है. Yeah. मैंने तो एक ही बात बोली थी, आप 15 साल बाद भी दुखी हो तो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं हो सकता, राइट. और लड़ाई कर लेने से होता क्या है, आदमी ना वो जो दबे हुए प्रखर है जो उसके अंदर दबे हुए हैं वो बाहर निकलने आने शुरू होते चले जाते हैं, और फिर आप जो गलती करने वाले थे ना औरों पे फटके, वो करनी आप बंद करते चले जाते हो. ठीक है. तो द सिंपलिस्टिक एडवाइस फॉर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ एंड स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ अर्ली इज इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू इट बिगिंस विद कॉन्फ्रंटेशन. एंड इंडियंस आर वेरी अफ्रेड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन क्योंकि हम एक सोशल सोसाइटी, बहुत ओवर सोशल सोसाइटी है. रिश्तेदार क्या कहेंगे, अबे रिश्तेदारों के घर अच्छे चल रहे हैं, उनको पता है कुछ, उनको पता होता तो बात ही क्या थी, वो तुमसे पूछने ही क्यों आते तुम्हारा घर कैसा चल रहा है. किन गरीबों की आंख में प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हो, वो खुद गरीब है प्रतिष्ठा के, राइट. और ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों की बातों का महत्व नहीं है, बट इतना नहीं है यूनिवर्सली स्पीकिंग. ठीक है. आप जनरली एक दायरा बनाते हो, इनकी बातें मैं सुनना चाहता हूँ. जैसे मैं अपने पिताजी की बातें सुनना चाहता हूँ, अपनी माता जी की बातें सुनना चाहता हूँ खुल के. आई लव माई पेरेंट्स एंड यू नो देव बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई एम ओके लिसनिंग टू. आई हैव ऑल्सो बीन इन अ प्लेस वेयर आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू माई फादर एंड ही वाज आउट ऑफ द इक्वेशन फॉर दैट टाइम. बट आई डिसाइड इंटरनली, फॉर इंस्टेंस, my girlfriend right now, she is not Indian, right? Say I bring it to my father's attention, I want to marry this girl who's not Indian. पापा बोलते नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ. मैं अपने साथ बैठूंगा, मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे मैं किसकी सुनना चाहता हूँ. ठीक है. मैं इतना लड़ चुका हूँ कि मेरे को ये धक्का मार के लड़ाई करने की कोई वजह रह नहीं गई मेरी लाइफ में कि पापा आप ये कैसे कह सकते हो, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा. वो हो चुका है मेरी लाइफ में पास्ट में. अब मैं बहुत, आई अंडरस्टैंड वो इंसान ही है, उसको उतना ही पता है जितना इंसानों को पता होता है. तो आई गो, सपोज मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं मैं अपनी सुनना चाहता हूँ, पापा की नहीं सुनना चाहता इस बात में. आई गो सिट विद हिम, बी लाइक पापा देखो ऐसा है, आप मेरे को बोल दोगे किसी और से शादी कर ले, मैं कर लूँगा, मेरी लड़ाई हो जाएगी, घर में चिक चिक होगी, मैं किसे गाली दूंगा आपको, फिर क्या फ़ायदा है, आपको गाली सुननी है नहीं, तो फिर इससे बढ़िया मैं अपनी गलती खुद कर लेता हूँ. मैक्सिमम क्या होगा, 5 साल में डिवोर्स हो जाएगा, 10 साल में डिवोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम यही डर है. हाँ ठीक है, प्यार करने किसके पास आऊँगा, आपके पास. क्या चाहिए आपको, हाँ ठीक है तेरी बात. अच्छा सेकंड केस लेते हैं, शादी की बात नहीं करते, कुछ ट्रिवियल बात करते हैं. मैं पापा से बोलता हूँ सपोज, पापा मेरे को एक मर्सिडीज़ दिला दो, खाली पीली, मेरा मन है. पापा बोलते नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दिलाऊंगा. यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी मर्जी है, मेरे को अपनी सुननी है कि पापा की सुननी है. मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को पापा की सुननी है, तो बात ही खत्म, तो बात ही खत्म. हाँ पापा आप ठीक कह रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट अ बिग इनफ इशू वेयर आई हैव टू टेक अ स्टैंड, राइट. इट्स नॉट इवन एन इशू फॉर मी, राइट. द जनरल पॉइंट इज, एक तो खड़े होना शुरू करो, और शुरू में आप इतने बर्डनड हो, आपके हिस्टोरिकली इतने दबे हुए रूप फंसे पड़े हैं, आपकी इतने इमोशन फटे पड़ रहे हैं अंदर. जब आप निकलोगे ना तो आप फटके ही निकलोगे. 1-1.5 बार मुंह से उल्टी बात निकलेगी ही निकलेगी, तो निकाल लो. जब वो निकलनी शुरू हो जाएगी और वो बहाव बहने लगेगा ना, उसके बाद आपकी कॉन्वर्सेशन बड़ी मच्योर होंगी डिसएग्रीमेंट के टाइम. उसके बाद आपको डिसएग्री करते हुए बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना पड़ेगा. द रीजन वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ किड व्हेन यू आर डिसएग्रीइंग इज बिकॉज यू कुड नेवर डिसएग्री एज अ किड. सो गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हो, बुरे मौके का? क्योंकि अच्छा मौका तो ये है. अब इसके ऊपर मेरे को लगता नहीं इस पर कुछ कहने को है. अर्जेंसी क्रिएट करना आदमी के दिमाग में बड़ा ज़रूरी है कि यार बहुत टाइम हो लिया, हम किसी और की नज़रों से जी रहे हैं, अब मेरे को अपनी नज़रों से जीना है. यार हम लोगों पर इतना प्रेशर है ना कि लड़ाई ना करने का, कि आप बुरे इंसान हो इफ यू फाइट विद. मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूं. मेरी मस्ती मेरे को बहुत है. लेट्स से योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, और जब पेरेंट्स पे बात आ जाती है तो बहुत ही आप बुरे इंसान हो जाते हो. दैट बहुत बुरा लड़ाई इंसान करना ओके ही नहीं है. मेरे से घटिया इंसान कोई नहीं है भाई साहब. मैं बता नहीं सकता आपको, मेरे से बुरा कोई हो ही नहीं सकता. नहीं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इफ वी स्टार्ट बिकमिंग ओके विद हैविंग अ टेम्पररी फाइट, डिसएग्रीमेंट, लड़ाई, और वहां से क्या निकल के आ रहा है, इसलिए वो हो रही है. आप तो बुराई के साथ ठीक हो, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ. क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा. अगर शोभा मेरे जाने के बाद आप कहते हो बेवकूफ है, कुछ भी बोलता है, मेरे को तो पता ही नहीं ना. हाँ. मैं तो अपनी मस्ती में हूं ना. मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मस्ती में अपने गाने सुन रहा हूँ, मैं अपना नाचते हुए जा रहा हूँ, मैं अपनी चाय पी रहा हूँ, मैं तो उस मस्ती में हूं ना. तो मेरे लिए क्या मैटर करता है आपकी जो आपने मेरे को प्रशंसा करी मेरी पीछे से, या मेरी मस्ती. हाँ हूं मैं बुरा इंसान, पर मैं मस्ती में हूँ. और मस्ती मतलब सच्ची मस्ती में. मैं अपने पापा से लड़ाई करके भी ये नहीं कहता कि मेरे मन में प्रेम ही है. हाँ वो प्रेम साथ बैठ के नहीं बैठ सकता, वो बात और है. मैं जेन्युइनली लोगों को एडवाइस करता हूँ शादी के बाद अपने घर वालों के साथ मत रहो. क्योंकि सास बहू और बाप बेटा ये 2 रिश्ते कभी नहीं बैठते. इशू आते ही आते हैं, कैसे नहीं आएंगे. आपके कॉमन इंटरेस्ट है और आप दोनों तलवार हो, हमेशा आएंगे. कभी धोखे में मत रहना, पास रह लो, साथ मत रहना. और ये स्टैंड लेने शुरू करो. कितनी बार हमें वो टीवी शो देख के समझना पड़ेगा कि सास और बहू की नहीं बनेगी.
कितनी जनरेशन हमें ये पीड़ा एक दूसरे को पास ऑन करनी पड़ेगी. क्या कर रहे हो? यही तो मैं कह रहा था, जागो, देखो और समझो, इसमें कोई बुराई नहीं है. और लोगों का क्या है यार, लोगों के घर अच्छे चल रहे होते तो वो हमारे पास आके नहीं बकबक कर रहे होते. हाँ मतलब जो संतुष्ट आदमी है ना, उसको जो किसी की नहीं लोग पड़ेगी. बहुत बेबाकी से और बहुत आसानी से इस तरह से बातें कर देते हैं, तो पीपल डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि इसको समझे कैसे, इसको डाइजेस्ट भी कैसे करें, ये इसने इतनी बेबाकी से कैसे बोल दिया, तो ऐसे थोड़ी बोलना होता है, ये I'll सही tell you थोड़ी है. something. I'll tell you something. यू नो आप कुछ- ये और इस प्रेशर से लोग डर जाते हैं. आप मेरे से कुछ टाइम पहले आप एक मजाक में बात कह रहे थे कि मैं कंट्रोवर्सी मेरे साथ होती रहती है. जब मैं अपने बाप से नहीं डरा, तो किसी का बाप मेरे को क्या डराएगा सच बोलने से? रियली पूछ रहा हूं, गुस्से में नहीं पूछ रहा, एरोगेंस अहंकार से नहीं बोल रहा, सत्य से बोल रहा हूं. मैं कैसे डाइजेस्ट कर लूं ये बात कि जब मैंने अपने पापा की अपनी मर्जी के आगे नहीं चलनी थी, जहां मेरे को सही लगा, तो किसी और की क्या चलेगी मेरे आगे? मैं उससे फ्री हूं, मैं उस बर्डन में फंसा ही नहीं हूं. और इसीलिए मैं कुछ लोगों को बहुत डरावना लग सकता हूं, क्योंकि But वो फंसे how हुए हैं. does one know that this is not arrogance? This is a true sense of knowing your क्योंकि truth मैं and your inner क्योंकि confidence. मैं तलवार लेके यहाँ वहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं ढूंढ रहा. मैं तो मस्ती के लिए निकला हूँ. एरोगेंस तो तब होगी जब कुछ नहीं हो रहा, जब मैं और शोभा बैठे हैं बिना कैमरा के, कोई वजह नहीं. मैं शोभा से कह रहा हूँ, शोभा मेरे से कौन पंगा ले सकता है? जब आप खाली जगह पे अपनी बढ़ाई या अपनी बुराई से उसको भरने लगो ना, तब अहम बन रहा है, तब ईगो कंस्ट्रक्शन हो रही है. आई हैव नो नीड टू से दैट टू यू. आई डोंट वॉक इन सेइंग अरे मेरे से पंगा मत लेना. ऐसी बात नहीं है. आप मेरे को बोलोगे कि प्रखर आपके कपड़े अच्छे नहीं, हम चेंज करवा दें, बोलूंगा हाँ आपका शो है, आपकी मर्जी है. तो मेरे को पता है ना, कहीं कहीं नमन है और कहीं कहीं तलवार निकाल के गला काटना भी है. वो करना पड़ता है ना. हाँ, वो दोनों पहलुओं में आप अपने आप को कैसे, पार्वती माँ सती भी हैं और काली भी है ना. अपने अंदर की वो शक्ति और काली और सती, उन सबको सब समझना, पकड़ना पड़ता है ब्रो. समझ के बैलेंस करके चलना. आई थिंक दैट इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज. Yeah, emotional intelligence is the reduction of a lot of it into just emotional Yeah. words. Yeah. Yeah. Right. So I think through this episode, we have tried to cover A lot of ground. a lot of ground, Yeah. a lot of ground, so to speak. And I really hope that the people who are listening to it, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, मुझे हर एपिसोड बनाने से पहले, कुछ भी एक कंटेंट 2 मिनट का भी डालने से पहले ये होता है कि if somebody is giving his 2 minutes to me, then what am I putting out there? Is it going to be worth their while? So I really hope that this episode is worth their while. मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपसे. अरे यार, And, मैं कहाँ लायक हूँ कुछ सिखाने के? नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, और मैं तो लाइफ में स्टूडेंट ही बन गई हूँ. तो मेरे सामने कोई मुझसे यंग होता है, मुझसे ओल्ड होता है, मैं तो सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ. अगर हमसे कोई कुछ सीख पाए तो सीख ले. And before you finish, Amazon, अगर मजा आया तो बेशरम सेल्स कर रहा हूँ, बेशरम मार्केटिंग प्लग है, जाओ खरीदो किताब भाई की. डोंट शट अप. Let me know how much you love me. Thank you so much. Yeah, thank you, Prakhar, for joining me on pleasure's the journey mine. within The pleasure's mine. podcast. Thank you. I hope you having me. had fun Yeah. with this conversation. I came in thinking कि I want to think, because मैंने सही में 1-1.5 साल से मेरे से किसी ने सवाल नहीं पूछे ना. मैं गया नहीं हूँ काफी पॉडकास्ट पे, काफी टाइम से नहीं गया हूँ. मेरे को था कि आज मेरे से सवाल पूछे जाए और मैं सोचूं, और अब मैं खुल गया हूँ. Yeah. तो I'm thinking smoothly and I'm very happy with the fact. मेरे को तो बड़ा मजा आया. मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट व्हिच काइंड ऑफ रीअश्योर्ड मी कि बॉस सही है ऐसे सोचना, और कई सारी चीज़ें जहाँ पे आपका माइंड ओपन होता है, अगर आप एक ओपन माइंड से किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करें. एंड दैट इज़ व्हाट दीज कॉन्वर्जेशंस जो हम एयर कर रहे हैं यूट्यूब पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, यही मुद्दा है कि शायद आपका भी दिमाग थोड़ा सा खुले और शायद आप समझ पाएँ, एक थोड़े बड़े एंगल से देख पाए चीज़ों को. बस उतनी कोशिश है. आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. एंड अगर आपके बहुत प्यार भरे कमेंट्स होंगे तो हम प्रखर तक जरूर भेजेंगे. नहीं, प्रखर खुद देख लेगा. प्रखर की टीम उसको स्क्रीनशॉट भेज देगी. हाँ हाँ. चलो मेरे को मेरे फैन बता देंगे वहाँ तेरी बुराई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रखर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बट थैंक यू सो मच शोभा. Thank you, such a pleasure. Such a pleasure. Thank you for watching today's episode. I really hope that it brought a lot of learning to you. Please do comment your favorite sections from the podcast in the comment section below. Do subscribe to the channel and help us reach wider audience by sharing this with your friends and family. See you in the next episode.